Hello, dear students. Welcome to the class today. How are you all doing? Hope you all are doing fine. So, the revision work that we are carrying forward, I just wanted to start the class. Today's video, wanted to start it with a positive note. Now, what is this positive note? Let me make one thing very clear, students. The students who are coming to attend the offline sessions, first thing that they have taken the risk and they are coming and attending the classes, lot of improvement is there. Even online students also improvement is there, but more improvement is needed in comparison to the offline classes students, the students who are coming and joining the offline classes, right? So I just wanted to tell, if you all carry on with this way, I am sure some of the students, many of the students can easily score 100 on 100 in the boards. It is not a tough task because previous 2-3 years it has been happening that the students have been scoring 100 on 100. Got it? So when this 100 marks they get, this shows and this proves कि 100 mark is possible. हाँ, तो जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं बेटे, आप करते जाइए and believe me, in social science getting 100 is not a tough task. Whatever instructions are being given now, why I am talking so is, while going through your revision test papers, I found that some students have started writing the answers as per the given instructions. जैसा कहा जा रहा है उसी तरह के आंसर्स आप लिख रहे हैं, which is something very encouraging. ठीक है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी होती है when we find students performing up to expectation. जैसा हम सोचते हैं उसी तरह का परफॉर्मेंस जब बच्चों का रहता है, it is something great. Got it? So yes, back to your class. Last video where we had left. Last video we have been talking about the Simon Commission coming to India. There I also pointed out that why Simon Commission had come to India. Okay, when Simon Commission visited India, certain the movements that were occurring, the way people were opposing it, it had a very deep impact on the Indians. And this opposition, please try to understand that some of our great leaders we lost while opposing the Simon Commission. One point that I had shown you, it was the how Lala Lajpat Rai. I'm so sorry for this pause. Because Vallabhbhai Patel बार बार दिमाग में आ रहा था. Actually what happened ना, बारडोली सत्याग्रह में अभी I discussed about the Vallabhbhai Patel. He was the main leader in that. तो वो मैंने कहा नहीं, Vallabhbhai Patel was not in Punjab. Lala Lajpat Rai had lost his life. So that was the pause. That was the reason of the pause. Okay, I apologize for that. Now what happened? That Simon Commission opposed. Indians were very annoyed, very agitated. I am using the word agitated क्योंकि काफी ज़्यादा नाराज थे लोग. हाँ, so this anger was leading towards a movement which was to start in a very forceful manner. काफी तेजी से शुरू होने वाला था ये movement. And क्यों अपोज कर रहे थे इसको याद रखना. Please try and remember that why were the Indians opposing this Simon Commission, because it did not had any Indian member in this. 12 members की committee थी ये, जिसमें कि there was no Indian member, and they were everywhere. They were greeted with black flag and the slogan "Go back, Simon." ठीक है, इसको आपको स्लोगन को भी याद रखना है. Go back, Simon, of course, very commonly used slogan in many movies, serials, बहुत सारे जहाँ पे भी आज़ादी से रिलेटेड या भगत सिंह की बात करते हैं तो वहाँ पे भी are talking about this.
In the movie Bhagat Singh also it was shown that Bhagat Singh for the first time he entered into this movement after seeing the condition of Lala Lajpat Rai. He got very angry कि how can our leaders be treated in this manner. इस तरह से कैसे लीडर्स के साथ बिहेव किया इन्होंने, तो दैट लेड for such a furious movement in such a furious manner. Okay, and when did it come? Simon Commission arrived in कब आए थे? This date is important. Please do remember the date. 1928. Okay, and people opposed it. Saying slogan क्या था? Yes, go back Simon. Got it? So you can understand that how furious it might have been. All parties, Congress, Muslim League, they participated in the demonstration. अब क्या है कि ब्रिटिशर्स को लगा ये तो मामला हाथ से निकलता जा रहा है. Very smart people. They did not want to face any big problems. The movement that had started very slowly, now the movement was taking momentum. Speed ले रहा था. हाँ, it was moving in a very fast pace. And Britishers were worried कि अगर ये मूवमेंट ऐसे ही चलता रहा तो अ टाइम विल कम जबकि उनको मतलब समझ में नहीं आएगा. दे रियली एंड डेस्परेटली वांटेड टू कंट्रोल दिस सिचुएशन. किसी भी तरह से ये सारी चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे थे जो कि उनके हाथ से निकलती जा रही थी सारी सिचुएशन. इन द मीन टाइम व्हाट हैपेंड, साइमन कमीशन आ गए. साइमन कमीशन की वजह से द पीपल वेर सो एंग्री. लॉर्ड इरविन, he was the vice chancellor at that time. He was the viceroy at that time. Lord Irwin announced साइमन कमीशन के सारी चीजें देख के he said that India would be given a dominion status. अब इस प्रपोजल को समझने की कोशिश करना. हाउ आई एम अटैचिंग इट, ये ओहो मैंने बता दिया उसको. एनीवेज, अभी जो हमने बात किया था इन द लास्ट वीडियो, वी हैव टॉक्ड अबाउट C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू. उन्होंने क्या किया था, व्हाट दे हैड डन, व्हेन दे हैड पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शंस, दे वेंट and they sat with the Britishers and they had proposed this. उन्होंने कहा कि पावर, कुछ पावर इंडियंस को भी मिलना चाहिए. बिकॉज उन्होंने कहा था कि दे वर फीलिंग कि ग्रेजुअली एंड स्लोली द ब्रिटिशर्स वुड बी चक्ड आउट ऑफ इंडिया. ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालना है ये तो पक्का था, लेकिन धीरे धीरे करना है, आराम आराम से करेंगे. ये सडनली वाली चीज जो है वो इनके दिमाग में नहीं थी. तो इन्होंने क्या किया कि डोमिनियन स्टेटस का ऑफर दे दिया फॉर इंडिया. एंड इसके लिए व्हाट डिड दे डू, दे हैव कॉल्ड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. दिस वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमेशा इन लंदन में होता था. इसको समझने की कोशिश करो. व्हाट वाज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एज द वर्ड इटसेल्फ सिग्निफाइज द मीनिंग. एक बड़ा सा राउंड टेबल होता है, ठीक है, बड़ा सा राउंड टेबल है, एंड पीपल सिट देयर एंड ट्राई टू डिस्कस द थिंग्स इन अ वेरी सिंपल मैनर, इन अ वेरी सिविलाइज्ड मैनर. ब्रिटिशर्स ऑलवेज यूज्ड टू फील बैड कि ये इंडियंस क्या हैं, व्हाट आर द इंडियंस डूइंग. जब देखो तो हल्ला करते रहते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद. व्हाई डू दे डू दिस थिंग? Britishers were very annoyed with this kind of structure, this kind of an attitude of the Indians. Okay, so Lord Irwin said, announce dominion status. इसमें डेट आपको याद करना पड़ेगा, in October 1929. Is it visible? Yes, it's visible.
October 1929 का डेट प्लीज रिमेंबर. एंड दे सेड कि डोमिनियन स्टेटस. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट वाज डोमिनियन स्टेटस. डोमिनियन स्टेटस मीन्स rule of British in center, मतलब central government, and Indians in state. Got it? मतलब इंडियंस को पावर दिया बट वेरी रेस्ट्रिक्टेड एंड वेरी लिमिटेड. दे गेव पावर्स टू इंडियंस लेकिन वेरी रेस्ट्रिक्टेड एंड वेरी लिमिटेड. रूल ऑफ ब्रिटिश दैट वाज देयर टू बी देयर, मतलब निकलने के लिए बाहर नहीं तैयार थे. लॉट ऑफ प्रॉफिट दे वर गेनिंग फ्रॉम इंडिया ना. lot of money making, lot of torturous things, economic policies, taxation. तो बाहर नहीं जाना चाह रहे थे. एंड अबव ऑल सेंटर पे दे सेड कि वी विल बी देयर एट द सेंटर, आप स्टेट ले लीजिए. So what did the Indians say? This did not satisfy the Congress leaders. The leaders who were there, who had gone to attend the round table conference. Round table conference है तो कोई ना कोई तो जाएगा. So the Congress leaders outrightly rejected the dominion status. They said कि we don't want any dominion status. And now the Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, they became very assertive. कि assertive मतलब अब तो उनको जिद थी. ठीक है, they have made up their mind that the Britishers would be chucked out. उनको बाहर करना है, किसी भी तरह से करना है. Liberals were there, moderates were there. They were proposing a constitutional framework within the British Dominion, gradually lost their influence. Okay, rule of British in center and Indians rule. Indians, but Indians का rule is a state में. That time it was not called state. That time it was called as province. क्या कहते थे? Province. ओके, तो प्रोविंसेस में कौन रहेगा? ब्रिटिशर्स, इंडियंस. और सेंटर पे कौन रहेगा? मीन्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग द इंडियंस हैव टू लुक अप टू ब्रिटिश. ओह प्लीज हमारे स्टेट में ये प्रॉब्लम है, इन आवर प्रोविंस वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, प्लीज हेल्प अस. मतलब इंडियंस को हमेशा झुका के रखना है, इंडियंस को हमेशा दबा के रखना है. दैट वॉज देयर मेजर थिंग. ओके, एंड दिसंबर 1929 में ब्रिटिश डोमिनियन, अब जो था ना, लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हुए देयर, द नरम दल, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू एंड देयर प्रपोजल्स, इट वाज लूजिंग इन्फ्लुएंस. The leadership of Congress, the people in the Congress, the members in the Congress, they were the new people. नया खून था, नया जोश था. और इसी नए जोशो खरोश के साथ now they have decided कि they will be taking the complete powers in their hand, और ब्रिटिशर्स को तो अब बाहर निकाल के भगाना. So what had happened? इसके आगे की कहानी क्या है? यहीं पे लिख देती हूँ. कांग्रेस सेशन was held in 1929. कहाँ पे? एट लाहौर. दिसंबर में हुआ था ये. लाहौर में 1929 में दिस कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड where they put forward the demand of Purna Swaraj. Okay, here decision of Purna Swaraj was taken. Got it? Complete independence. Purna Swaraj, the word itself signifies the meaning. Complete independence in the hands of the Indians. And उन्होंने क्या किया? The Indians
What did they do? They have decided, they have made up their mind that there should not be any British domination anymore. क्योंकि इसी आइडिया के साथ, with this idea and with this aim, they were heading forward. साइमन कमीशन में आके जो गलतियां की ना, उसका उनको बहुत हर्जाना भुगतना पड़ा. The study that they had done for the Indian administrative system and the Indian constitution, it was like a backfire on them. उन्हीं के ऊपर ये बहुत बड़ा सा एक it was like a big blow to the Britishers. उनको लग रहा था इससे अच्छा था कि साइमन कमीशन को ना बुलाया होता. We shouldn't have called Simon Commission only. Okay, they started feeling that way. So 26 जनवरी 1930 में they said कि पूर्ण स्वराज हो गया. ठीक है, पूर्ण स्वराज means complete independence. देखो यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करो. स्टूडेंट्स मेजरली एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे गेट कंफ्यूज्ड कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 26 जनवरी 1930. 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड. इंडिपेंडेंस डे वॉज टू बी सेलिब्रेटेड. उन्होंने वहां पे बैठ के डिसाइड किया. दे डिसाइडेड. अब इसकी आगे की कहानी मैं बताती हूँ आपको. पहले तो दे हैड द कांग्रेस सेशन. ठीक है, लाहौर में बैठ के दे हैड टेकन द डिसीजन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. उन्होंने कहा पूर्ण स्वराज. तो अभी भाई हमने डिसाइड किया है. आई डिसाइडेड, कांग्रेस डिसाइडेड, the major people who were there, they had decided. Britishers को कौन बताएगा? Who will tell the Britishers that now we are not accepting your dominance? आपको अब हम कुछ नहीं मान रहे हैं, हम अब अपनी मनमानी करेंगे, आपके मन में जो आ रहा है कर लीजिए. We are not concerned. हमको आपसे कोई मतलब नहीं है. ओके, तो फॉर दैट पर्पस उन्होंने क्या किया, थोड़ी बहुत तैयारियां की. वॉज टू बी सेलिब्रेटेड, सॉरी 26 जनवरी 1930 को इन्होंने कहा कि अब जो है हम इंडिपेंडेंस डे मनाए. अरे आप ये सोचो ना, वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड, सो व्हाट मैम, सो व्हाट वाज दिस? This was a blow to the British. Okay, हम यहाँ पे हैं, we are the rulers, we are the ones looking after the administration. ये होते कौन है इंडिपेंडेंस मनाने वाले? हमारे होते हुए ये इंडिपेंडेंस मना रहे हैं. How can they celebrate Independence Day in our presence? Are you understanding? So it was very contradictory. And a lot of preparations were there. Many people were there who participated in these preparations. Got it? लेकिन बहुत ज्यादा people were not knowing about it. उनको ये complete independence का concept पता नहीं था. Many people who were unaware of this complete independence concept. So gradually and slowly इन्होंने क्या किया, the people who had celebrated, they took the pledge here. यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कसमें खाई कि भारत को आज़ाद कराएंगे and we will be free, we will make the Britishers leave India. इस तरह के आइडियाज के साथ the Indians celebrated the Independence Day on 26 January 1930. Got it? Independence Day pledge was taken and वहाँ पे उन्होंने क्या भाषण दिया? What all speech was given by the leaders there, that we will be seeing at last. Now this Independence Day pledge was taken and this had a deep impact on the minds of the people. आगे के लिए महात्मा गांधी said कि अब this is the right moment. People are charged up. In the meantime came the salt tax. Got it?
What was the salt tax? क्या था ये? Yes, the Britishers have imposed the salt law, have come up with the salt law, and they have imposed the salt tax on the Indians. Okay. Now students, when we are talking about salt tax, we have already discussed about the importance of Independence Day, importance of 26th January. One of the very important events that had happened. This event has really affected the Indian political system and further decisions that has been taken. इसमें क्या था? What we need to understand, children, that Republic Day is celebrated on 26th January. There is a reason behind it. What is the reason behind it? That 26th January 1930 को what did we do? We have celebrated the Independence Day. लेकिन Independence Day तो उसी दिन मनाएंगे ना जिस दिन Independence मिला है. Got it? So Independence Day is celebrated on 15th of August, and on 26th January we decided that we will be celebrating our Republic Day. So Constitution was implemented on that day, and that is how now we are carrying forward. Please understand, children, that Mahatma Gandhi and his contribution to the Indian history and the Indian political system is very remarkable. हर जगह पे हम इसके बारे में पढ़ते हैं. We read a lot about him. लेकिन इसमें क्या है? In this chapter, what is evidently pointed out here is, children, कि we are talking for the first time about the participation of the common people. आम आदमी को उन्होंने किस तरह से, देखो क्या होता है, there we need to understand the things in a very sequential manner. कैसे इन्होंने शुरू किया था अकेले दम पे? When he had gone to Champaran, did he involve the whole Indian people? No, he did not. शुरुआत अकेले की, लेकिन देखो बाद में कितने सारे लोग इनसे जुड़ते चले गए. So when the cause is good, when the aim is clear, then nobody can stop further. Okay? तो ये हमने पढ़ा, and Purna Swaraj, it was decided, complete independence that would be taken. Now what happened? This was a tax imposed by Britishers on Indians. Got it? And this was to be opposed because Gandhi ji said कि salt is a very powerful symbol that could unite the nation. पूरी दुनिया, पूरे अपने कंट्री को अगर एक उसमें लाना है, to bring the whole countrymen in one string, to bind them into one. 31st January को he sent a letter to Viceroy Irwin. क्योंकि क्या है, कभी बिना नमक का खाना खा के देखा है? In my previous video also, when I was talking about this chapter, I discussed the same thing. Did you ever had food without salt? Have it, children. आपकी मम्मी उम्मी कभी खाती होंगी, because जब व्रत होता है, व्रत, you know, this is a व्रत. This is a tough task, having food without salt. तो गांधी जी said कि salt being so important for the human being, उसके ऊपर टैक्स लगाना was seen something which was extremely to be opposed. Okay, so Gandhi ji, he made up his mind that now salt tax has to be removed and Indians have to be bind into one. एक सूत्र में बांधना है इंडियंस को और सॉल्ट टैक्स को हटाना है. So what did महात्मा गांधी do? इन्होंने क्या किया? 31st January 1930, he sent a letter to Irwin. He sent a letter to Irwin. लॉर्ड इरविन कहते हैं, वाइसरॉय इरविन.
ठीक है, एंड इसमें इन्होंने क्या किया था, ही हैज मेंशन्ड, ही स्टेटेड 11 डिमांड्स, ठीक है, इनकी 11 रिक्वायरमेंट्स थी, बिकॉज देयर वर मेनी थिंग्स दैट इंडियंस वर अपोजिंग, वन ऑफ देम वाज द सॉल्ट टैक्स, ठीक है, ही स्टेटेड 11 डिमांड्स in that letter. Now, when he had stated 11 demands in that letter, he clearly mentioned, got it? In these 11 demands, मैंने कहा ना कि many things were there which were being opposed by the Indians. तो जब अपोज कर रहे हैं, जो मेजर थिंग वॉज देयर दैट वॉज द टैक्स ऑन सॉल्ट. नाउ व्हाट हैपेंड कि जनरल इंडस्ट्री का कुछ स्पेसिफिक डिमांड थे इंडियंस के, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके पीजेंट्स तक सारे ही लोग तो परेशान थे. एवरीबडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम वॉज इन टू अ टर्बुलेंट स्टेज. गॉट इट? सो demands were wide ranging. All the classes within the Indian society, they could identify with them. All these demands that were there, the Indians could feel that they are attached to these demands, they are related to these demands, and these demands needs to be fulfilled. Okay. Now what happened? The most stirring इसमें से सबसे ज़्यादा important था. Most important was abolish the salt tax. Got it? सॉल्ट टैक्स को हटाना है. जैसे कि मैंने कहा, इसमें क्या था, why he had thought about abolishing the salt tax, because कि it is the most consumed thing and it is such a thing, salt is such a thing जो कि अमीर गरीब सबके लिए ज़रूरी है. It is important for each and every person, whether rich or whether poor. तो this is a point and this is a question that is very frequently asked, that why did Gandhiji oppose the salt tax? Because equally consumed by the rich and the poor, and it was on salt, and the government monopoly was there over its production. Okay? Government, I mean British government, had monopoly on its production. मतलब समझ रहे हो, मोनोपोली, nobody else can get a permission to manufacture salt. अगर आप नमक का एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, ब्रिटिशर्स विल नॉट परमिट यू ओनली, यू विल नॉट गेट अ लाइसेंस. अभी कोई व्हाट हैपेंस की इंडस्ट्री खोलनी है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इज देयर, तो गवर्नमेंट परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना. सो दे नेवर गिव अ परमिशन टू ओपन अ फैक्ट्री वेयर सॉल्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड. Okay, Mahatma Gandhi declared and revealed it was the most oppressive phase of British rule. He said कि इससे ज़्यादा खराब कुछ नहीं कर सकते हैं ब्रिटिशर्स. So he said कि 11th मार्च तक अगर इनकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई, so he gave the deadline. Deadline means कि final date of 11 March to Britishers. लॉर्ड इरविन को उन्होंने कहा, ठीक है, ब्रिटिशर्स को लगा अच्छा somebody has got this much of guts कि हमको धमका रहे हैं. धमकी देने का तो खाली उन्हीं का ठेकेदारी थी ना. I am just talking to you in a very simple manner. Irwin was unwilling to negotiate. Irwin said कि please don't give us all this demand and on, and don't give us any orders. हमको जो करना है वो हम करेंगे. तो now this was an alarming. अब गांधी जी ने कहा कि they will launch the civil disobedience campaign. So Gandhi ji decided to launch a civil
disobedience can be. Large scale. क्योंकि अभी क्या था, बिफोर दिस वॉज द नॉन कोऑपरेशन एंड नाउ वॉज द डिसओबीडियंस. पहले क्या था कि डोंट गो टू द ऑफिसर्स, डोंट लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग, डू व्हाट एवर दे आर सेइंग, उसका ठीक ऑपोजिट करना है, नॉन कोऑपरेशन. लेकिन अब क्या था, ब्रेक द लॉ. ठीक है, जो डोंट ओबे द ब्रिटिश ऑर्डर्स, go against the British orders. लेकिन one principle was there, non-violence. One principle that needs to be followed was non-violence. Got it, children? Civil disobedience and how it was carried on further, this we will be discussing in the next class. Till then, children, thank you so much and all the best to you.